Let me be Sahil Khattar for 5 minutes and ask you five. What's your take on chilling? My take on chilling. Chilling is basically a word that they have developed. I don't know from where. It's one of the other slang. We don't have girlfriends. We have bays. Chilling is a good thing to do. मतलब आज से अगर 100 साल पहले चिलिंग होती थी तो वो एक पेड़ के नीचे सरपंच बैठा होता था, चाय का कप चल रहा होता था और वो पूरे गांव के बारे में बात कर रहे थे कि किसकी भैंस चोरी हो गई है, किसकी बीवी ने किसी का टांका पेट किया हुआ है. वो चिलिंग तब होती थी और अब चिलिंग अब होती है जो आप कॉफी शॉप्स में देखते हैं. Sex education. It's very mandatory. If you are not educated about sex, you shouldn't have it. मतलब सेक्स एजुकेशन नहीं है इसीलिए तो हम हंसते खेलते कूदते 1.25 करोड़ हो गए हैं. Being the funniest host ever. That's very kind of you to say that. I don't believe that. I would still like to get up the next day and work hardest as possible. But there's no take on it. I think it's just hard work. I'm telling you honestly. And hard work can be done by anybody. मेरे में कोई special बात नहीं है. I still, the kind of hard work I put in is very simple. I get up and read the newspapers. I read articles. I watch a lot of funny content. And that everybody does. But they just don't execute it in their personal lives. That is it. I just do that. And I think it's just hard work that you need to put in and you can be the funniest guy ever. From being an RJ to doing this Vox Pop, how did this change, as you said? So it's a journey. I started out doing theatre in school. I was 16 when I started doing theatre professionally. So उसके बाद रेडियो आया, रेडियो के बाद टीवी आया, टीवी के बाद इंटरनेट आ गया. So Vox Pop is one thing that has gone to another level, which is मतलब हम 90s से देखते आ रहे हैं. MTV, चैनल भी Vox Pop करता होता था, रोड्स पे जाते होते थे लोग. But it did not become what it is now with being Indian. अभी मतलब कोई और लेवल हमें दिखता है कि पहुंच चुका है and we want to maintain it and we try to take it to another level. So it's a journey. मतलब कभी कुछ आया, कभी कुछ आया, कभी कुछ आया. जो वर्क किया वो करते रहने का और जिस पे आप पहुंचना चाहते हो उसकी तरफ वर्क करते रहो. As we've seen you in Know Your Punjabi, it is really nice to see you in that video. To see you during a Vox Pop and during this video. Yeah. So what about your future acting में thing? I'm 5 years old to Bombay. There have been a lot of acting stints that have come my way. In terms of television, सीरियल आते थे और मैं नहीं कर पाता था because I thought वो थोड़ा सा रोल करते थे जितनी भी मेरे को एक्टिंग आती है इतनी सी. फिर फिल्में आनी शुरू हुई. फिल्मों में कोई अच्छा रोल नहीं मिलता मेरे को. सारे कहते हैं यार कैरेक्टर एक्टर बन जाओ, कैरेक्टर एक्टर बन जाओ. नहीं बनना यार, नहीं देखने करने के खेत. क्या खास बातें करने के खेत में. ये साले आज के डायरेक्टर मुझे कैरेक्टर एक्टर बना रहे हैं. Not that there's something wrong in being a character actor, but मतलब I don't want to be typecasted. I want to be a character actor जिसके बलबूते पर पूरी पिक्चर खींची जाए. I want meat around the bone when it comes to roles. So वो रोल नहीं आया अभी तक. Otherwise I would have done that for sure. You have been to many cities while you were working for it, no? So which city did you find the best and why? हैदराबाद. A lot of people would say कि हैदराबाद में ऐसी क्या खास बात है. दिल्ली भी तो है, चेन्नई भी है, बैंगलोर भी है और other cities that we've gone to. हैदराबाद में ना दिल है. The city is so आबाद. It's just not हैदर का आबाद. It's actually आबाद. You go there, you meet people, you talk to them. हर एक आदमी कंटेंट के एवज में ना जहर उगलता है, and in a good way. Like how you say ना this is shit and then you say like this is shit. They confidently tell everything whatever. मतलब वो जहर नहीं उगल रहे थे, वो जहर उगल रहे थे. We had the hardest time editing the Hyderabad videos because the people give you content like crazy. Like there are punchlines after every minute, after minute, after minute, every minute, and you're like कहाँ क्या डाले कुछ नहीं पता है. And the language that है क्या सा नक्कू जाने का करने का है ना मियाँ, बेगन में मिला दिया ना. तो लड़कियों के बारे में पूछा क्या बोटी कबाब लगती है मियाँ. Which was the best episode you had fun while shooting? Basically. YouTube Fan Fest. That happened in March last year. So हम 8 महीने से वीडियोस कर रहे थे एंड हमें पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं. हमें व्यूज मिल रहे थे बट रिस्पॉन्स मिलना नहीं शुरू हुआ. YouTube Fan Fest गए, जनता पागल, हम उससे ज़्यादा पागल रह गए. ये कहाँ गए यार हम, ये तो जन्नत है भाई, इससे अच्छा क्या चाहिए. एंड वहाँ पे फिर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. लाइक आई कुड नॉट वॉक 3 steps
Everybody wanted attention and there was so much of commotion. और फिर कोने में जाके एक free bar था. So it was a lot of fun. How to be funny. Yeah. The cheat code is very simple. If you are not likable or if you are not liked by people, you can never be funny. There's the psychology behind it. If today, let's say couple, you go to him for a picture, he said, "No, मेरे पास time नहीं है." Though he will never say that, he's a very humble guy. But I'm just saying, मेरे पास time नहीं है. Tomorrow, when you watch his TV show, you'll be like, "अरे नहीं, this is not fun. This is not happening." Why? Because you don't like him. This is a very subconscious thing that happens with funny people. If they are not endearing and not affable, people will not find them funny. And tell me one person in your life or in your life that you don't like and find them funny. Never will it ever happen. So if you really want to be funny, you really have to be endearing. You really have to be affable, and don't do it as a job. Do it like how you mean it. This is the cheat code I have figured out. Though I was like this always, but I wasn't a very likable guy till the time I was 21. So I was this jerk, I was this assholic kind of guy which nobody wanted to hang out around. So they didn't find me funny. But suddenly, when life changed for me and I opened up to life, the sabbaticals happened, my life turned from this to this. That is when everybody thought, "Hey, ये तो थोड़ा funny है." So ये ऐसा है. So I changed and everything just changed. City was very difficult to, you found it it's threatening while shooting or anything. थ्रेटनिंग तो कोई नहीं थी. एक भी नहीं. थ्रेटनिंग बल्कि मेरे साथ टेलीविजन में हुआ था एक बार. So we were going through Sadar Hills, which is in the northeast. We were doing a show called Beg Borrow Steal for UTV Bindas. I was a VJ with them. And this area had economic blockage and everything. So proper curfew लगा हुआ. हम एरिया में एंटर किए हैं and हमने देखा लेफ्ट में एक ट्रक जला हुआ. राइट में देखा तो 5 ट्रक लाइन से चले हुए हैं. मैं कहा यार यहाँ जाना है, पक्का जाना है, तो देख लो, मतलब ऐसा नहीं है शूटिंग नहीं भी कर सकते हैं, मेरे को ना पैसे दो चलेगा, मेरे को घर जाने दो, बस इतना बहुत है. सो देन वी वेंट अहेड. थोड़ा सा डार्क हुआ एंड देन 4 इनोवाज का कॉन्वॉय था हमारे शूट का. सडनली दिस मारुति 800 कम्स इन, ओवरटेक्स द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड एकदम से स्किड मारती है और अंदर से ना 4 बॉम्बर जैकेट डाले हुए नॉर्थ ईस्ट लड़के निकलते हैं और लिटरली ऐसे ही एक ने बंदूक निकाली है, दूसरे ने अपना निकाला है, तीसरे ने निकाला है और चारों ड्राइवर्स की कनपट्टी पे रख दी है. कहते गाड़ी आगे नहीं लेके जा सकते बिकॉज कर्फ्यू है ना. कर्फ्यू में आप कुछ कर नहीं सकते हो. कर्फ्यू में आप चलोगे भी तो इट इज़ वेरी थ्रेटनिंग. और दे मग यू, दे वांटेड टू मग अस. और एक बंदा जो मेरी उस पे आया ना गाड़ी पे, उसने ड्राइवर की कनपट्टी में रखा, मैं ड्राइवर के पीछे बैठा था और वो ऐसा था. मैं कहा साला ये दिखा उधर रहा है, मारेगा मुझे, मेरे को पता नहीं है क्या होगा. तो sometimes these kind of situations happen which are very threatening. But ऐसा कोई threatening situation नहीं है. हाँ, मार पड़ते पड़ते तो बहुत बड़ी बढ़ जाए. You see the kind of stuff that we do. Live commentary. वो बहुत ही रिस्की था, तो मतलब बच के जाना पड़ता था, कोई मारना पड़ता. Because anybody can get offended and they can jump back on you. Yeah, but कई बार लोग offend भी हुए हैं and उन्होंने साइन भी नहीं करी है NOC and we've not put it in the edit. So सबके साथ वो होता है, the things that you wonder that actually happen. But it's just that we don't want to show the other side. It's all about having fun. It's all about being good to everybody. So there are 2 kinds of laugh that you have, whether it's a laugh with somebody or at somebody. So we don't believe in at somebody, we believe in laughing with somebody. So the best platform or comfortable कि हाँ इधर मैं कर सकता हूँ अपने मर्जी की, इधर मैं नहीं कर सकता. Internet gives me the liberty to be myself. That is one reason I have said no to at least 6 to 7 anchoring jobs on TV last year. Though I regret some of them, but it's really the kind of language that I have, the kind of verbiage we can pull off, the kind of ideas we can pull off on internet. On TV I cannot ever put that शायरी जो हैदराबाद की वीडियो की शुरुआत में है, वो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी. ए फलक के चांद डालो and whatever comes next. So वो सारा कुछ I can never pull it off on television. I can only pull it off on internet. And even if I get down to television or go up to films, I will never leave internet.